So, Assalamu alaikum and hello everyone. This is me, Mehtaba Manwala, and I'm a student at Jahan School Online Academy. So, welcome to my show, Inspiring Minds, where I will try to inspire you. And as you know, that on daily basis we will do interviews, and when we will do interviews, so we have a very special guest in our studio. So today I have a very special guest in my studio, and he is Dr. TPS, and Dr. TPS is an experienced educationalist, motivational speaker, and life mentor. And with a background in space science and psychology, he empowers individuals through dynamic training programs on leadership and emotional intelligence and mind management, impacting thousands across corporate, educational, and personal development settings. So, yeah, let's start this interview with meet and greet session with Dr. TPS. So, hello, sir. How are you today? Enjoying my dear son Mahtab. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. How are you today? Enjoying. Always enjoying. Okay, wonderful, sir. Okay, so yeah, I can introduce yourself in the start of interview, but now it's your turn to start to give me your introduction. So yeah. Yeah, you already introduced. I am Dr. TPS. I was with the Space Department as a scientist. Then took my retirement. I am into social service, keep roaming around different parts of the country, giving lectures on different people. I am in different schools and colleges, engineering colleges, universities, almost every day. That's what I'm doing. So I keep traveling. Yeah. Wonderful. Use that. Like, what strategies do you use to use customize your training programs for different different Yes. corporate? Today, just before this, I had a class for um, principals and educators, teachers, school owners, senior academicians in Philippines. I am a constant teacher for a program called Lead Philippines, Development of Philippines in Academics. So today I was talking about artificial intelligence applications in education, applications in financial management. So they had some classes. So last week also I was talking to them on leadership qualities, transformation. So different countries online. I just finished today on Philippines program. Yeah. Wonderful, sir. Okay, so like, how do you integrate your experience as an scientist in your mentoring sessions? See, every scientist knows how to critically analyze a problem. When there is a problem, we want to find solutions. We don't want to tell excuse and run away. Correct. There is a scientific problem, whether it is mathematics, physics, or chemistry or biology. A doctor wanted to find solutions. A scientist wanted to find solutions. So when there is a problem, we are not trying to make troubles. We are not trying to make it complicated. We want to solve the problem, make it simple and solve it. Every human problem, either it is an education problem, you don't know how to study maths, my job is to reduce that problem, make it simplified, and explain it so that you can learn it much easier. So scientist's job is to create the life of people simpler. A mentor is also doing the same thing. See, every technological development, you have a remote for controlling the television, making the life of the user of the television simpler. So the world development, science and technology, every scientist, their contribution is to make life simpler. Correct. Yeah, Make it correct. more simple. A mentor's job is also same. So it is not different. A scientist can also be a mentor if they understand it perfectly. Yeah. Okay, sir. So, like, what key factors do you consider when assessing the effectiveness of your training programs? See, if we keep learning something in the brain, take some information from the Google, put all that information here, and if I speak, assume Mahdab is listening to me.
Mahatab will understand this man has taken from somewhere and then blah 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 blah. Correct? If it comes Yes, from teacher. my heart, if it comes from a heart with feelings, expressions, you will realize, oh, this man is an experienced person. So every training program, I don't call it as training program. Training is something which you repeat many times. We train the dog how to catch a fish when we throw. Correct? We train people for cycling. That means repeatedly do the same job. I don't do that. What I do is I direct people, mentor people. Direct them means I will only show the path and you have to walk. So generally what do I conduct is workshops. Workshop is where the participant also have to work. Training program is I keep on instructing, somebody else does it. No. My classes is always workshops. So in workshop, everybody is participant. I can only give job to Mahatab only which I can do. Which class Mahatab is studying? Which I am grade in are you? pre-ninth and student of Rehan School level 1. Okay. So 9 in the school, which grade? Pre-ninth. Yeah. So during that time, what you had to study the maths, I will take the syllabus, convert that into a activity work. Your physics will become an activity. Your chemistry will become an activity. Your language will become a drama. So learning techniques are different. So I am not a trainer, I am not a lecturer, I am not a teacher. I am a person who does workshops. That's my class. That's what I do. Wonderful, sir. So, like, how does your background in psychology influence your approach to life mentoring? See, it's not that I wanted to learn psychology, I learned. But when I started teaching, every teacher in those schools, they have to study the psychology of children. If I don't understand how the psychology of you, I cannot speak to you. People come with problems. When they come with problems, I must understand when I speak something, what is going in them, what is basic character, what is the behavior, how do people behave in different social situations. This is what is learning psychology. But my psychological learning is not from the Western science, what people have written in psychology. Eastern, India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, maybe Myanmar, Bangladesh, we have a different culture. It is not the American UK culture. The way in which looking at that I am a Southeast Asian person. Looking at your face, I know you are not from Europe and England, right? You are not an American. So our look, our behavior, our way of eating, our way of dealing with the parents, dealing with the relationship is entirely different. So it is not psychology alone. Understanding the culture, understanding the relationship, all that will become part of doing a mentoring. Mentoring is not just telling something from taking from. See, lot of people are there today. They are from America, they are from UK, they will take a training program and become a mentor. What is that I am doing? I am trying to make Mahatab a UK boy, an USA boy. You can never become. You will lose your Pakistani style. You will not reach in UK style also. You will be somewhere in the inside the sea. Nothing will happen to you. No change will happen. So I've learned Western science, but I am using what my Eastern philosophy, our culture, our heritage, our knowledge, हमारा कहानी पूरा ढूंढना पड़ता. पुराना जमाने में क्या था, कैसा था, हमारा किंग्स, नवाब्स, वो कैसे ऐसा प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व किया. Take all that lesson, mix it today, and then make our food. अमेरिकन वाला चपाती नहीं खाते ना, रोटी नहीं खाते. हम रोटी खा के अमेरिका का पिसा के जैसा काम करे तो कैसे होता है? नहीं होता है.
So we have a wrong system today. Our medical system is wrong. Our culture is different. Our medical system is different. Our life is different. Our life system is different. हम पूरा कॉपी करके यूज कर रहे हैं. That's not what Dr. TPS does. I have an MS in psychotherapy, but I don't apply any of this knowledge. I will use my life, my tradition, my heritage. India is a big country. I am from the south west corner of India, Kerala. I cannot use the same method in the northeast of India. Northeast India is 3,000 kilometers away. 3,000 kilometers away, culture is different, style is different, food is different. I have to use that method. So first I will understand the local methodology, understand their psychology, their culture, and use it. That's what I am doing. क्या बढ़िया Okay. क्वेश्चन पूछा है बेटा. Thank you so much, sir. Okay. So, okay, sir. So now tell me that, what methods do you use to measure the impact of your sessions on participants' performance? जनरली लेक्चर तो ज्यादा नहीं देते. आज भी फिलीपींस का क्लास था. 40 मिनट्स to 30 मिनट्स पूरा कहानी खत्म करने के बाद इंटरेक्शन होता है. सो इंटरेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. बाद में वो पूछ रहे थे मैं 2 क्वेश्चन देना है उसको एग्जाम कंडक्ट करने के लिए. तो मैं उसको बोला आप स्टूडेंट्स ने कितना क्वेश्चंस पूछा, वो बड़ा क्वेश्चंस है, उसका लेवल तो बहुत बड़ा है. मे भी ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकते. एग्जाम कंडक्ट करने के लिए मेरा क्वेश्चन लो लेवल रहता, आपका क्वेश्चंस बड़ा था. तो वो पूरा एग्जामिनेशन में कर दिया. अभी मैं आपको क्या एग्जामिनेशन देंगे अभी, करेक्ट. तो मैं मेरा स्टूडेंट्स को ऐसे करते, आप उसका लेवल तो बड़ा होना है. तो द क्वेश्चंस विल बिकम पार्ट ऑफ माय सेशंस. इफ इन माय सेशन देयर आर नो क्वेश्चंस, आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड टीचर. माय स्टूडेंट्स आर नॉट गुड स्टूडेंट्स. एवरी टीचर इज लाइक दैट. हमारा, if you can ask good questions, you are a good student. So I love Mehtab because Mehtab has got great questions. मेरा सारे पाकिस्तानी इंटरव्यू देखे तो इतना nice questions, innovative questions, great questions. Not many people will ask. Hey, maybe out of the whole 100 interviews I had in Pakistan, maybe 4 or 5 girls, 4 or 5 boys would have asked such questions. You are one among them. I'm going Thank you so very much. I'm going to give you a certificate for asking innovative questions. Oh, thank you so very much, sir. Okay, can you do it after this interview? I will give. Immediately I'll give. Thank you so very much, sir. Okay, so let's move to next question. And my next question with you is that, how do you stay updated with the latest advancement in behavioral sciences and incorporate them into your programs? See, I keep on. Today I was talking to the Philippines group. Immediately what I did is I was showing them how to use in your classroom augmented reality, artificial intelligence. वो कैसे यूज करेंगे, कैसे काम को आ जाता. So what do I do? Now you can go to Google and then get to this Google, and you have a 3D lion there. So you click the 3D lion. I'm just clicking the 3D lion. So you will get a lion here. Got it? So I can take this lion in my classroom. तो मेरा घर पे मेरा छोटा बच्चा था, वो बच्चा को मैं दिखाया आज. अब भी स्क्रीनशॉट लिया, देखो मेरा घर पे उसको दिखाया. Got it? So wonderful, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी फ्रीली हमारे नॉर्मल फोन पे यूज कर सकते हैं क्लास में. देयर इज नथिंग ग्रेट रिक्वायर्ड. यू डोंट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी. इंटरनेट है, आपको थोड़ा दिमाग है, ढूंढ लो, बहुत सारे ऐसे मिलेगा आपको. So I will use it every day in my class. Wonderful, sir. Okay.
Let's move to next question. And my next question with you is that, like, what challenges do you typically face when conducting large-scale training programs, and how do you address them? See, Mahtab, मैं 10 साल पहले, 10 साल नहीं, 14 years बैक, 2010 पे मेरा क्लास, मेरा 140 बीटेक स्टूडेंट्स था, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्लास में बोला, आप आपका गांव में जाओ, गांव में जाके 10th क्लास बच्चों को बोलो, डॉक्टर टीपीएस उसको 10th क्लास का एग्जाम, 10th क्लास का एग्जाम एक बोर्ड एग्जाम है. वो बोर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी ने, ये स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है. वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सब बच्चों को लेके आओ. 140 चिल्ड्रन अपना अपना गांव जाके, अपना अपना पुराना स्कूल जाके वो सब बच्चों को लेके आया. पता है कितना लोग आया? 5,600 स्टूडेंट्स. मेरा क्लास था एक बड़ा, ये पॉलिटिकल मीटिंग्स रहता ना, 5,000 बच्चे लोग आए तो 10th क्लास बच्चे लोग आए तो कैसे क्लास लेना पड़ता. पॉलिटिकल मीटिंग का जैसा था मेरा क्लास. वो भी, वो हैदराबाद का बाजू है. हमारा इंडिया में भी एक हैदराबाद है, सेंटर ऑफ इंडिया. हैदराबाद बैंगलोर के बीच में एक जगह पे था. वो अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश भी पता नहीं है उसको, तो वो लैंग्वेज पे मैं बात करना भी मुश्किल है. बात कर सकते हैं बट क्लास लेना अलग बात है ना. सो आई स्पोक इन इंग्लिश. बीच में जाके मैं एक बच्चों को बोलो, ये ट्रांसलेट करके बोलो, तो कितने ध्यान से बैठना पड़ता वो लोग. तो उसके बीच बीच में जाके मैं क्लास लिया. एक बार इंटरवल दिया तो पूरा लोगों को जमा करने के लिए फिर मुश्किल है. तो मेरा क्लास 6 आवर्स कंटिन्यूस, 6 आवर्स नॉन स्टॉप क्लास, 5,600 बच्चे लोग है. और मेरा क्लास भी था रेजिडेंशियल प्रोग्राम, घर पे आ जाओ मेरे साथ रहो, 2 दिन का प्रोग्राम है, 48 आवर्स. तो बच्चे लोग पूछेंगे, हम बिस्तर लेके आना है क्या, पिल्लो लेके आना है क्या, ड्रेस चेंज करने के लिए क्या लेके आओ, बेडशीट लेके आना है. आई सेड इफ यू स्लीप ओनली यू रिक्वायर ऑल दिस, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप. 48 आवर्स कंटिन्यूस क्लास, नॉन स्टॉप. सो 48 आवर्स नॉन स्टॉप क्लास भी था मेरा. ऐसा बहुत सारे क्लास लिया है. आइडिया इज, ऐसा बैठना नहीं है, एक्टिविटी रहता, अटेंशन रहता, पूरा लिखना है. मेरा क्लास के बाद में क्या पूछेंगे उसको, आपका नोट एक पिक्चर लेके मुझे भेजो. मेरा लास्ट यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स प्रोफेसर था. मैं यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स प्रोफेसर था. मेरा क्लास में पूरा मैं ऐसे बात करते रहता. स्टूडेंट का असाइनमेंट क्या है, मैं क्या बोल रहा है पूरा लिख के पिक्चर लेके मुझे भेजो. इंटरनल मार्क्स उसके हिसाब से देता मैं. तो क्या करना पड़ता, मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा लिखना पड़ता. वो प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होता है. मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वो लिख के देना मुझे, उसका सॉल्यूशन लिख के दिया तो मैं मार्क्स देता. सो एबिलिटी, you have to listen, you have to convert them into problems, solve the problem and send it. That is what is to be done. So तरीका अलग है. वो टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. क्या है? टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. मेरा नाम देखो, TPS, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स. Wonderful, sir. Wonderful. Okay, wonderful. Okay, sir. Let's move to the next question. And now tell me that, like, how do you approach training for senior executives versus like entry level employees? See, we have a bank employees appointment, they have a training program that's called orientation program. Senior managers, that's called a refresher program. दो programs रहता है. Refresher program is how to cope up with the happenings in the world. Orientation is orient you for the organization. मैं डायरेक्टर था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इंडिया का पूरा हायर एजुकेशन का टॉप यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन.
पूरा प्रोफेसर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम का डायरेक्टर था मैं। ये 2 प्रोग्राम उधर भी करते हैं। एंट्री लेवल पे अलग है, वो हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम क्या है, वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, हाउ डू यू अब्सॉर्ब इट, इंप्लीमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो उसको रिफ्रेशर प्रोग्राम बोलता हूं। सो 2 प्रोग्राम्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम, वेरी क्लियरली इट इज लिस्टेड आउट, ऐसा करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा पता है। अलग अलग है, उसका तरीका भी अलग अलग है। Okay, sir. So, what specific techniques do you use to help participants improve their emotional intelligence? All assignments. See, when somebody comes, immediately they should know. They should read, prepare, make their own chart. हमारा एक्सपेक्टेशन ये है। उसके बाद अभी ये इंटरव्यू के पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, मैं क्या किया था, आई हैव सेंड यू ए डॉक्यूमेंट। आप बैकग्राउंड चेक करके, पढ़ के, देख के उसके बाद आया तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते। बिना बैकग्राउंड पढ़ के आप आए तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते क्या? तो कभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होने वाला है वो पूरा इंफॉर्मेशन में दे देते। एक बार ऐसा भी हो गया था, पूरा इंजीनियर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हेडिंग क्रिएटिविटी टू द पावर ऑफ इंफिनिटी, हाउ टू बिकम हाईली क्रिएटिव, क्रिएटिविटी टू द पावर ऑफ इंफिनिटी। आप यूट्यूब में देखें तो वो देख सकते हैं आपको, क्रिएटिविटी टू द पावर ऑफ इंफिनिटी। पहले भी पूरा दे दिया, मेरा लेक्चर ये होगा, पावर पॉइंट ये है, लेक्चर में ये पूरा सारा होगा बोल के पूरा दे दिया। वो लोग सोच रहे हैं कल लेक्चर होने वाला है, पूरा इंफॉर्मेशन हमको दे दिया। कोई भी ऐसे नहीं देता ना, मैं पूरा इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया। नेक्स्ट डे आने के बाद मैं बोला कल कुछ दिया, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछो। मैं लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, हो गया लेक्चर तो कल ही दे दिया, मैं कंटेंट तो दे दिया, टेक्स्ट बुक आपको दे दिया ना, अभी क्वेश्चंस पूछो। तो हजारों क्वेश्चंस आ गया था। कितने पार्टिसिपेंट्स, 1400 पार्टिसिपेंट्स, 1000 क्वेश्चंस। रजिस्ट्रेशन करके एंट्री पाने के पहले क्वेश्चंस लिख के दे दो मुझे। जनरली लेक्चर के बाद क्वेश्चंस आता है, मैं क्या किया, पहले ही लेक्चर नोट्स देने के बाद पूरा पढ़ के आओ, मुझे क्वेश्चंस पूछो। तो वो लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर था, लेक्चर नहीं था मेरा। तो अलग तरीके से करता हूं, कभी भी काम अलग तरीके से करना। Okay, sir. Wonderful. So, can you share a case study where your mentoring led to significant transformation in participants' career? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट केसेस। हर एक दिन आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉन्ग ऑडियो मैसेजेस। मेरा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से भी आता है। पाकिस्तान में काम करने वाला, उसका घर का सवाल, ऑफिस का प्रॉब्लम, सब कुछ मुझे ऑडियो मैसेजेस आता। इसका प्रॉब्लम क्या है, क्या कैसे सॉल्व कर सकते। तो फैमिली का प्रॉब्लम है तो अलग रहता, प्रोफेशनल प्रोग्राम है तो अलग रहता, प्रोफेशनल फैमिली रिलेशनशिप में, सोसाइटी में प्रॉब्लम अलग अलग रहता है। ये पूरा देख के सॉर्ट आउट करके उसका कल्चर मालूम होने के बाद वो सॉल्यूशन दे सकते हैं। हमारा ये हम अभी साउथ वेस्ट इंडिया पे, केरला, लास्ट 3 मंथ्स इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। मैकेनिकल इंजीनियर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना अच्छा है, सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है, और कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने से क्या फायदा है। हर एक हमारा लैंग्वेज मलयालम है, मलयालम में बहुत सारे डिस्कशंस वो पूरा में डाल दिया, यूट्यूब में डाल। वो यूट्यूब देख के बाकी लोग आते मेरे साथ, तो मैं क्या बोलते, मैसेज आने के बाद ये दिन का ये प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकल डॉक्टर टीपीएस आपको मिलेगा, कंप्यूटर साइंस डॉक्टर टीपीएस आपको आंसर मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग डॉक्टर टीपीएस आपको आंसर मिलेगा।
मैथमेटिक्स डॉक्टर टीपीएस, आपको आंसर मिलेगा। फिजिक्स डॉक्टर टीपीएस, पूरा आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, इंग्लिश ग्रामर डॉक्टर टीपीएस आपको मिलेगा उसका क्लास में, पूरा सॉल्यूशन ऐसे। Wonderful, sir, Dr. TPS, like wonderful. Okay, so now tell me that like what ethical considerations do you keep in your mind when providing psychological counseling to participants? अभी आप पूछा है, मैं किसी का नाम नहीं लिया, केस बोलने के टाइम पे मैं इसका स्टोरी ऐसा है बोल के नहीं बोला है, करेक्ट? दैट इज द एथिकल कंसिडरेशन। हम किसी का नाम नहीं देते, उसका स्टोरी नहीं बोलते, वो ऐसा बोला बोल के नहीं बोलते। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कंसल्टेशन ऑनलाइन पे, आई डोंट मीट पीपल, आई डोंट सी पीपल। अभी मैं इधर है, आज भी बहुत सारे लोग पूछा आके मिल सकता है क्या? मिलने का जरूरत नहीं है, आपका सॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, आप अभी पढ़ रहा है, ठीक है, तो आने का जरूरत नहीं है। मैं पल्स देख के ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं ना, आके मिलने का जरूरत क्या है? नो थैंक्स बोलने के लिए, थैंक्स भी नहीं चाहिए, बस आप खुशी में रहो, हैप्पी है। तो अटैचमेंट नहीं, हमको किसी से बाउंडेडनेस नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। हम तो कर रहा हूं काम एज ए सोशल सर्विस, उसके मिलने से मुझे भी फायदा नहीं है, उसको भी फायदा नहीं है, तो नहीं मिलो। सो इट इज नॉट पर्सनल रिलेशनशिप, इट इज ओनली माई सोशल सर्विस। हमारा मास्टर ने बोला था एक बार, योर प्रेयर्स ऑलवेज प्रे दैट यू आर यूजलेस। मेरे से आपको किसी को फायदा नहीं है बोल के प्रे करना है। हम डॉक्टर है, ये डॉक्टर डेली प्रे करता है मेरे पास बहुत लोग आना है, ऐसा प्रे करे तो मेरा उसका मतलब क्या है? आई एम थिंकिंग एवरीबडी हैज टू बिकम सिक, आई डोंट वांट एवरीबडी टू बी सिक। मेरे पास बहुत लोग मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आ रहा हूं, उसका मतलब क्या है? उसको खुद मैथमेटिक्स पढ़ने का ताकत नहीं है, इसलिए वो आ रहा है। तो मेरा प्रेयर वो नहीं है, सब लोगों को इंडिविजुअली एवरीबडी शुड बिकम पावरफुल, एवरीबडी शुड बिकम गुड। सो विद दैट मोटिवेशन ऐसा प्रेयर है तो आई एम ऑलरेडी एथिकल मैन, राइट? दैट इज माई एथिक्स। मेरा प्रोफेशनल एथिक्स ये नहीं है मेरे पास सब लोग आओ, मैं सब कर सकते बोल के नहीं बोल रहा हूं। सब लोग खुद पूरा इंडिपेंडेंटली पावरफुल रहना है, दैट इज माई प्रेयर। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, let them become happy. That's what. Wonderful, wonderful, Dr. TPS. Like, wonderful. I enjoyed this interview very much. And it's my last question with you. It's my last question. Like, how do you handle situations where participants have conflicting personal and like professional goals? See, हमारा हेड है प्रैक्टिकल, हार्ट है फीलिंग्स, आई वांट आई वांट आई वांट आई वांट। ये बोलते डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। इंटरनली इटसेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, आई वांट टू गो समवेयर, माय माइंड बुद्धि विल से, ब्रिलियंट बुद्धि विल से डोंट गो, डोंट गो। सो हमारा इंटरनल भी प्रॉब्लम्स है, सबको है ये प्रॉब्लम। हमको बहुत बड़ा फेलोशिप मिला, लंदन जाना है, बट मामा पापा बोलते डोंट गो, हमारे साथ ही रहो। होता है, सबको होता है ना। तो रोल, हमारा फैमिली रोल, हमारा फैमिली रोल, गोल, हमको वो होना है, वो बड़ा होना है, पोजीशन मिलना है, पावर मिलना है। रोल, गोल, वैल्यू, balancing role, goal, value is solution for all problems. We have a goal, I have to become great. I have a role, I have to be with my family. I have a value, मेरा value क्या है? I have to be in my country. I don't want to change my culture. मेरा खाना सभी रोटी खा के सोना है रोज, इधर का पानी पीना है। I don't want some water from some other country. I have to think about it. That is my value. This is what first basically वो सोच लो, समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले लो, सब ठीक हो जाता।
रोल गोल वैल्यू वो चेंज हो सकता है. स्कूल एज पे अलग है, टीन एज पे अलग है, मैरिज पे अलग है, मैरिज के बाद अलग है, तो अलग अलग हो सकता है. So you can change, but now learn about the whole world. Be a global man. Be a global man. Learn about the whole world, but be a local person. So it is called glocal, global and local. Glocal. Okay, so I am a glocal citizen. I am a local man, but वर्ल्ड के बारे में पूछो सब कुछ पता. फिजी तक गया है, पाकिस्तान नहीं आया अभी तक. ओके, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, लंदन, यूरोप, अमेरिका घूमते रहता. जर्मनी, न्यूजीलैंड, सब जगह देखना है. बट बी रूटेड इन योर ओन कल्चर, इन योर ओन लैंड. Okay, sir. And in the last of this interview, any message that you want to give to our audience who are watching this interview, so you will give it. I wish I can see a lot of Pakistani people. Anyway, I cannot come to Pakistan, you cannot come to India. So let us meet in Gulf. We will all meet in Gulf. दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान में घूमते रहता है वही जगह पे. करेक्ट. और मे बी यूके. मतलब जो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए यूके पे रहेगा. वो यूके जाने के बाद बुलाओ, मैं आता हूँ उधर, आपको मिलेगा उधर यूके में. लास्ट ईयर ए टाइम पे ए मंथ अक्टूबर में मैं यूके पे था. 200 स्टूडेंट्स, एक दो नहीं है, 200 स्टूडेंट्स. 200 स्टूडेंट्स का मीटिंग पे दे बुलाया मुझे. ऑल ऑफ देम गैदर्ड टुगेदर एंड वी हैड अ ग्रेट डे. नॉर्थैम्पटन, लंदन पे नहीं है, थोड़ा दूर, लंदन से भी थोड़ा दूर है. आई वाज देयर. मेरा बर्थडे था, उधर सेलिब्रेट किया. ऐसा है. तो वी विल मीट Okay. मतलब इन इंग्लैंड. Yeah, okay, inshallah. Okay. Thank you so very much, Dr. TPS, that you will give me this time, like amazing time with you. Like, I like this interview very much. I enjoy this interview very much. Maybe you also enjoy this interview very much with me. 100%. And thank you so very much, sir. Thank you so much for your And time. all your group of people who are working under the great mentorship is doing wonderful job. Wonderful job. I am not able to make such a good team in India. आपका पाकिस्तान में वो कर रहा है. बिग सैल्यूट. इतना Thank you so much. intelligent students, lot of questions, meeting somebody from a different country, asking such questions. I wish इंडिया पे नहीं मिल रहा है. मैं तो बहुत ट्राई किया, नहीं मिल रहा है. So I wish all the best to you, all the best to your mentor. Great ability. Thank you so much. Thank you so much, Dr. TPS, and thanks to the audience Love you. who are. Love you Love too, you a sir. lot. Love you. Thank you, and thanks to the audience who are watching this interview after this interview, and thank you so very much for seeing this interview and view this interview. Inshallah, we will meet in the next interview with another special guest. Take care of yourself, and bye bye. Allah Hafiz. Bye bye.